Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Venkatesh Dongri. I am a software engineer at Google, and I keep getting a lot of comments, a lot of PMs, in fact even emails that, hey, I'm in first year, I don't know what to do, how can I get internships and all of these things. तो यार तुमको एक बात बताता हूँ मैं. Today's video is not going to be like some random चीज जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जाओ प्रोजेक्ट बनाओ, अप्लाई करो, मिल जाएगा, रेफरल ले लो. नो, मैं एक प्रॉपर तुमको स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर टू लैंड एन इंटर्नशिप इन योर फर्स्ट ईयर. क्या पढ़ाई करना होता है, कैसे करना होता है, कहाँ अप्लाई करना होता है, what are the skills required, कैसे करते हैं, how to use LinkedIn and all of these things मैं तुमको बताऊंगा. Because when I was also in my college, I was able to land internship in my very first year. And इस पे मैंने एक separate video बना रखा है कि how I made 20 lakh rupees just by internships when I was in college. Go check this video out. In that video मैंने बताया है कि मैंने कैसे करा. Now I will tell you कि तुम कैसे कर सकते हो. How you can also earn money when you are in college, doing internships, learning a lot of things. So let's get into this. अ वीक अगो मुझे एक ईमेल आया किसी बंदे का. वो कहता है कि आई एम इन फर्स्ट ईयर, मुझे इंटर्नशिप क्रैक करना है, मैं कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ. आई सॉ हिज रेज्यूमे एंड मेरे को एक लाइन में समझ में आ गया कि इसका क्यों नहीं हो रहा है. देखो, रिक्रूटर्स हैव जस्ट 6 seconds टू स्कैन योर रेज्यूमे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी लाइन दैट यू हैव इन योर रेज्यूमे इज वर्दी ऑफ दैट 6 seconds ऑफ द रिक्रूटर. सो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि अपने आप को कैसे मतलब तगड़ा बनाए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ सॉलिड सेट ऑफ टूल्स इन योर टूल बॉक्स. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि you don't know anything, you just finished your 12th standard, you're now going to your college and I'm gonna assume कि तुम्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता है and एकदम मतलब फ्रेश तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, राइट. I'm just gonna assume कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है. बहुत सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि they try to learn everything इन जस्ट फर्स्ट ईयर. तो मैं ये भी करूंगा, मैं एआई भी करूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा, ऐप डेवलपमेंट, तुमको सब कुछ फर्स्ट ईयर में करना होता है. डोंट डू दैट मिस्टेक. You have to do things step by step, one by one. Of course, you can go full throttle, full speed, तुम कर सकते हो चीजें, but I really want to help you do good in your college and internships as well. But that does not mean कि मेहनत सिर्फ मैं करूंगा यहाँ वीडियो के अंदर बताने के लिए. तुम्हें भी वापस जाकर मेहनत करनी पड़ेगी. You have to have that sheer focus and will to do things, avoid distractions. And if you make up your mind, I'm sure you will do it. क्योंकि देखो, तुमको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत खराब है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वो हमारा कैसे होगा, क्या होगा. वो मेरे tier 3 कॉलेज से हूँ. I'll come back to the tier stuff. बट मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, मार्केट में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं. There are a lot of openings and good quality of engineers जो है, जिनको एक्चुअल में चीजें डेप्थ में समझ में आता है ना, बहुत कम लोग हैं. And that is why you need to do things in a very deep and a proper way right from the start. जो भी टॉपिक पकड़ोगे, make sure कि तुम अच्छे से समझ में आ रहा है तुमको, कि तुमको 4 साल बाद भी अगर मतलब करना पड़े तो you don't have to sit going from scratch. तुम एक दो बार चीजें देख लोगे, तुमको आ जाएगा. Prepare in that way. Now a lot of you might be thinking कि ओ मैं तो मतलब बेकार कॉलेज से हूँ, मेरे कॉलेज से मतलब कुछ नहीं होने वाला है. Let's keep the college aside. I don't care if you are from tier 1, tier 2, tier 3, 4, जितने भी तुम मतलब अच्छे या फिर घटिया कॉलेज से हो, I don't care. End of the day मैटर ये करता है कि तुम्हारे पे स्किल कितना है, तुम किस लेवल के बंदे या फिर बंदी हो, and how capable you are. देखो, a good college will obviously open a lot of doors for you. You will have good alumni and all of these things. That does not mean कि अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से नहीं हो तुम कुछ कर सकते नहीं. And you don't have to wait or depend on your placement cell to get you internships, get companies on campus. मैं बात कर रहा हूँ completely off campus. Absolutely off campus. You don't have to rely on your college for anything. Let's start. तुम first month में क्या करोगे? What will you do? What is the first thing that you're going to do? You will pick one programming language. Don't try to learn all languages. तुमको सब कुछ नहीं सीखना है. एक लैंग्वेज पकड़ो ठीक से. It can be C++, Python, Java. इन तीनों में से एक लैंग्वेज पकड़ना है to start doing DSA. ओके, सबसे पहले लैंग्वेज सीखना है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि तुमको कौन सा लैंग्वेज पसंद है. अ लॉट ऑफ बिगिनर्स चूज पाइथन, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि डोंट स्टार्ट विद पाइथन. पाइथन इज एक्चुअली अ वेरी नाइस एंड अ सिंपल लैंग्वेज टू लर्न. बट अगर तुम एक बार पाइथन सीख लिए, लर्निंग C++ और जावा इज गोइंग टू बी अ लिटिल, तुमको थोड़ा दिक्कत होगा. बिकॉज यहाँ पे इन पाइथन यू डू थिंग्स डायरेक्टली. मतलब तुम वेरिएबल का मतलब वो डिक्लेयर नहीं करोगे कि व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज एंड दीस थिंग्स. एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, लाइक प्लेन इंग्लिश टाइप लगेगा तुमको पाइथन. बट इन C++ जावा दिस मेमोरी मैनेजमेंट, यू हैव टू डिसाइड कि विच डेटा टाइप, विच वेरिएबल, तो बहुत चीजें होते हैं जो स्लाइटली डिफरेंट है. एंड you will learn Python very easily if you learn C++ or Java first. तो I learned C++ as well. मैं तुमको भी ये recommend करूंगा कि learn C++ और Java is also fine. तुमको ये करना है, सबसे पहले pick a language, learn that. Next, after you have some good grasp in the language, तुमने थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख लिया, start doing DSA. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है. तुम्हारा कोई 3rd 4th ईयर का बंदा करके रखा है 500 क्वेश्चन का स्ट्रीक, तुमको भी लग रहा है कि वो मेरे को भी करना है हार्ड क्वेश्चन वगैरह. नो, काम डाउन. ने लैंग्वेज अभी बस सीखा है. You have to now build that analytical and logical thinking. So this will come by solving basic problems first. लैंग्वेज सीख लिया, you can try to build simple textual based CMD programs की रेस्टोरेंट हो गया या फिर ATM मशीन हो गया, टिक टैक टो हो गया.
बिल्ड दीज थिंग्स। एंड तुम जैसे जैसे चीजें बिल्ड कर रहे हो, एंड दिस इज अगेन सी प्लस प्लस जावा के अंदर, ठीक है, बहुत बेसिक टेक्स्ट बेस्ड तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो फॉर योर ओन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। ये होने के बाद में यू कैन गो टू हैकर रैंक और लीड कोड और हैकर अर्थ, कहीं पे भी एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहां पे यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन देयर स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तुमको क्या सीखना है? लर्न द बेसिक थिंग्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, अरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, स्टार्ट विद दिस। एंड तुमको कोई मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर डीपी नहीं पूछेगा और ग्राफ भी नहीं पूछेगा। इफ यू गो एंड चेक फॉर एग्जांपल गूगल स्टेप इंटर्नशिप का मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है दिस फॉर फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, वो तुमको ये नहीं पूछते कि तुमको एकदम हार्ड लेवल के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इनका रिक्वायरमेंट क्या है? दे रिक्वायर यू टू हैव सम एक्सपीरियंस और सम आइडिया अबाउट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस, जावा, पाइथन एंड CS कोर फंडामेंटल्स जो होता है तुमको वो आना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। एंड ऑफ कोर्स बाकी चीजें मैटर करते हैं कि तुम्हारे अचीवमेंट्स वगैरह, बट द पॉइंट इज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल द 5 लैंग्वेजेस, दे एक्सपेक्ट यू टू नो वन लैंग्वेज और मे बी 2 एंड यू आर गुड एट दैट लैंग्वेज। तो तुम लैंग्वेज सीख लिया, सम CS कोर फंडामेंटल जो है, बेसिक कोर फंडामेंटल्स, इट रिक्वायर्स थिंग्स लाइक अरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह वगैरह, राइट? यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप टू ग्राफ्स एंड डीपी फॉर नाउ, एटलीस्ट इन योर फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट। जो तुम्हारा स्टार्टिंग का फेज है, यू डोंट हैव टू जंप देयर डायरेक्टली, इवेंचुअली धीरे धीरे करके यू विल गो एंड यू विल रीच दैट स्टेज एज वेल। ये से चल रहा है, फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। आफ्टर दिस आई एम गिविंग you 1 month का टाइम to learn your language and get started with DSA. In the second month you will again continue doing your DSA. साथ में you will start building a project. Now you can either pick one track of let's say web development or AI ML or app development. कोई भी मतलब एक track pick करो. Let's say if you pick web development for example, this is very simple to get started. If you want to have a live clickable link on your resume, the simplest way to get started is building websites. How to build a website? You will learn HTML, CSS, JavaScript. Now I'm telling you 3 languages. तुमको लग रहा होगा कि बहुत मतलब वो 3 लैंग्वेज और सीखने पड़ेंगे. This is very simple. तुम आराम से सीख जाओगे. If you have learned C++, Java, any other language you learn will be very simple for you to learn. ये हो गया. ये तो तुम्हारा लैंग्वेज हो गया DSA का. C++, Java, Python, any language that you're doing, this is your DSA language. Now building के लिए start with a simple static website. ठीक है? Don't bring React or Angular or Next.js. It's fine. पहले इसको सीखो. बेसिक DOM क्या होता है, HTML, CSS क्या होता है, अच्छे से सीखो. How to center a div. ठीक है? Basic things. Learn this. And build a static website. It can be a portfolio website. It can be about you. What was your journey? 10th, 11th, 12th. तुमने क्या करा? What have you done? What are your achievements? What contest you won as a kid? You can just build a basic portfolio website for yourself, not to show to the world, for yourself. Now you've learned this. Now you can pick a framework. ठीक है? Framework सीख लो. React हो गया, Angular हो गया. You can learn one of these frameworks and actually build a live project. ठीक है? तुमने बना दिया ना, how to host it, how to maintain this. Now comes something called as GitHub. ठीक है? तुमने सुना होगा Git is nothing but a version control system जहाँ पे you get to maintain different versions of your project. तो now you have to learn Git and GitHub and actually host your project live on GitHub ताकि उस URL से कोई भी तुम्हारा वेबसाइट देख सकता है. React हो गया. You can now learn backend, how to handle things वगैरह वगैरह, right? You can pick Node.js, you can pick Fast API, Django, Flask. You can pick one of these frameworks for your backend and you can start doing your backend. ठीक है? ये हो गया. Now you are able to build a little bit of full stack applications. Along with this, learn a database. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि नो सीक्वल, डोंट डाइव सच डीप इन येट. एक चीज अच्छे से पकड़ना है, सीखना है. ठीक है? एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आ गया, एक बैक एंड फ्रेमवर्क आ गया, डेटाबेस, सीक्वल, मोंगोडीबी, वन ऑफ दीज यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन लर्न एंड एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाओ. दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, बेसिक स्टार्टर प्रोजेक्ट फॉर यू टू लर्न. यू कैन डू अ लॉट ऑफ सिंपल क्लोन्स और मे बी डे टू डे ऐप जो आप यूज करते हो उसका क्लोन बना दो, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस. दिस इज स्टिल नॉट अ गुड प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे. ठीक है? आप तुम अभी तक सीख रहे हो. नाउ DSA चल रहा है तुम्हारा साथ में. While doing DSA, you have learned how to develop things. HTML से JavaScript हो गया, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बैक एंड फ्रेमवर्क, डेटाबेस हो गया. Let's say 3 महीने तक तुमने ये कर लिया, 3-4 months. ठीक है? You have done this. Now, next thing is starting to participate in contests. Remember, तुम जैसे जैसे चीजें बिल्ड कर रहे हो, जैसे जैसे चीजें तुम लर्न कर रहे हो, it is very important कि you keep posting about these things on your social media. मतलब I'm talking about Twitter और LinkedIn. These are 2 very powerful social media applications जहाँ पे your dev community is यार super active and you don't know तुमको कब कौन देख रहा होगा. So first जाओ and send a lot of connection requests to recruiters or engineering managers in different companies where you aspire to work in future and hope that they accept your connection request. Now let's say a recruiter sees you posting about some things consistently for months कि okay this has been the progress and नजरों में रहोगे भाई किसी के, मतलब तो हो सकता है कि somebody is watching. So try to keep posting things that you're learning, not just एक मतलब बना दिया प्रोजेक्ट, एक फोटो स्क्रीनशॉट डाल दिया कि ये मैंने बनाया है. नो, प्रोग्रेस दिखाओ कि ओके आई एम लर्निंग दिस, आई एम लर्निंग दैट, ये हो रहा है, आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कीप ऑन पोस्टिंग रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली. नाउ योर फर्स्ट पोस्ट में नॉट बी परफेक्ट, बट तुम इवेंचुअली चीजें सीखोगे कि पोस्ट कैसे करना होता है, ट्विटर पे कैसे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं. लिंक्डइन इज अ सुपर पावरफुल टूल. तुमको तुम्हारा अबाउट सेक्शन जो है अच्छे से तुमको बनाना है. डोंट राइट स्टूपिड थिंग्स लाइक एस्पायरिंग, डायनामिक, ये वो. भाई दीज थिंग्स डोंट वर्क. Write about real things that you like, जो तुम्हें करना पसंद है. And don't make it sound like some robot has written. There should be a human element to it.
कि कोई पढ़ेगा समझेगा कि कौन बंदा है, क्या है, इसको क्या पसंद है। डोंट राइट बिल्ट अप थिंग्स लाइक ओ आई एम अ फास्ट लर्नर, आई एम अ लॉयल पर्सन। नहीं भाई, ये सब मैटर मतलब नोबडी गेट्स अ जॉब विद दीज थिंग्स। योर स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको ये बताना है, ठीक है। you're doing things, you're posting on LinkedIn. Now what is the next thing that you have to do? You must start participating in contests, coding contests, hackathons. Because यार तुम जितना एक hackathon में सीखोगे ना, like those 2 days of hackathons will teach you a lot more than any 2-3 weeks tutorial. That pressure that you will have of building and developing things and shipping things in hackathon will teach you a lot. This is also where you start networking. You start meeting different people from different colleges, or maybe different people in your own college, and you make friends, you build a team, like-minded people doing some cool stuff. So it is very important कि you start participating in hackathons as well. And तब जाके तुमको समझेगा कि if there is some technology that you require to build or complete your project, या तुमने सीखा नहीं है तो उसको सीख जाओगे, right? It is very important you keep participating consistently in hackathons, and these hackathon projects that you are building will go to your resume. So this is the advantage. यार best case में अगर तुम hackathon जीत गए, chances are जो कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रखा है, they might give you some chance of internship, it might give you some visibility. अगर तुम हार भी गए, still one good project where you have solved a real world problem that will be in your resume. So it is very important to keep participating in these hackathons. Yeah? Now you're participating in hackathons. Next चीज क्या करना है? Open source. What is open source? यार तुमने React जो मैंने बताया, React क्या है? It's an open source framework. इसका code base is live out there on GitHub. Android Studio, it's an open source software. People can use Android Studio to build apps for free. ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे ओपन सोर्स के, एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड सी कि ये कैसे बना है, इनका कोड बेस क्या है, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग कोड इनटू देयर कोड बेस. हाउ? गो टू गिटहब एंड सर्च गुड फर्स्ट इशू. इसका मतलब ये होता है कि अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स रिपोजिटरीज दे वांट बिगिनर्स टू कम एंड कंट्रीब्यूट. तो गुड फर्स्ट इशू का मतलब ये होता है कि दिस इशू दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज बिगिनर फ्रेंडली, एंड कोई भी बिगिनर इसको सॉल्व कर सकता है. सो गो एंड फिगर आउट दिस इशूज. काफी सिंपल रहता है, सम टेक्स्ट चेंज या फिर सम रीडमी फाइल क्लीन अप, ऐसा बग या फिर ऐसा कुछ रहता है दैट यू कैन एक्चुअली इजीली बी एबल टू डू इट. सो यू हैव टू फाइंड दीज इशूज एंड कंट्रीब्यूट. इससे क्या होगा? दिस विल शो दैट यू कैन वर्क विद बिग कोड बेसिस and you have some experience working with production code basis. That will go in your resume. 6 months तुमने ये काम करा है, you have participated in hackathons. Speaking of hackathons, hackathons मिलते कहाँ पर है? There are some platforms. Stop, MLH, HackerEarth, HackerRank. यहाँ पे you will find a lot of hackathons. Apart from that, stay on the lookout for hackathons conducted by companies. A lot of companies also conduct their own hackathons, like Flipkart Grid हो गया, या फिर JP Morgan हो गया, Smart India Hackathon हो गया, Hack with Infi हो गया. There are so many hackathons that are out there for students. They want freshers to come and participate. Tata Tech Byte हो गया. यार काफी सारे hackathons है जो चलते रहते हैं. You have to go and hunt for them. I gave you some examples, some really popular examples जो मेरे को पता है, मैंने तुमको वो बताया. Go and hunt for them. Open source. Yeah, there is Google Summer of Code. I'll make a separate video on this, by the way. There is Girl Script Summer of Code. There is Hacktoberfest. These are all open source contributions. They want people to come and contribute. They want people to come and write code. So you have to be on the lookout for all these events, all these contests, all these hackathons. You have been preparing for this in your entire first year. So तुमको DSA आता है, तुमको development आता है, you have done some hackathons, you have some good projects. Now build your resume. I have a complete series going on. How to not build your resume, college resume roast series. If you even watch any random 3 episodes of my resume roast series, तुमको समझेगा कि resume कैसे बनाना है and कैसे बनाना नहीं है. I will give you a template. You can use that template to build your resume. The link for this is in the description of this video. It is on Overleaf. Go and build your resume on Overleaf. Now, don't add generic things like, oh, I participated in a contest, or I hosted a contest in my college, I did a project and coursework. No. Let's take an example of you actually conducted a contest in your college. You can reframe it something like, organized a college-wide event with 1,000 plus attendees. Something like that. जहाँ पे तुमको result दिखाना है. You are doing X and there is results that you can measure by Y and you did Z to accomplish that. तुमने क्या करा, उसका क्या result रहा and तुमने कैसे करा. X, Y, Z. This is how you form bullet points. Always show results if you can. Right? तुमको बस हवाबाजी नहीं करनी है कि मैंने ये करा है. तुमको proof of work दिखाना है. It is very important to add GitHub links of your projects in your resume ताकि क्लिक करके कोई देख सके कि तुमने क्या करा है. That is very important. Finally, you have your resume. Next thing is applying to your jobs. कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, क्या मिलेगा? Go to Internshala. ठीक है? My first internship that I got was via Internshala. It's a good platform, but you have to be aware of scams as well. काफी सारे लोग वहाँ बोलते हैं कि okay, give me 2,000 rupees as security deposit and then we'll send you all the tools. No. हमेशा ये बात याद रखना, इंटर्नशिप के लिए कभी भी किसी को पैसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है.
You should always get paid. Never pay from your pocket to do internships. If they are asking you to pay, it's probably a scam or probably not worth your time, even if it is not a scam. So try avoiding that. Just like Internshala, there is another platform called as Wellfound. There is Peerlist.io. There is LinkedIn. There is Naukri.com. यार इतने सारे platforms हैं. Go to all the platforms. Create a profile. Solid profile बनाना तुमको अच्छे से बना के रखना है. Add all your details, all your skills, all your projects, all your achievements, and start applying. Now you don't have to randomly apply to all the internships that are out there. तुमको क्या करना है? Spend some 10 minutes. Read a description की उन्होंने क्या बोला है. What are they looking for? See कौन सा company है. Try to send some requests to their recruiters जो है. Try to send a customized message कि hey तुमको short punchy रखना है. Don't make it a big paragraph. In 2 lines explain कि तुम कौन हो. ठीक है. Send the link of the job description and tell कि hey I have applied for this job. In 2-3 lines तुमको बताना है कि तुम कौन हो. ये job link है and to give you a chance. ठीक है. I will give you a template for this in the description. Check that out. And try to reach out to recruiters while you're applying for these jobs. And you can hope to get shortlisted. I'm sure if you do things diligently, जो मैंने तुमको बताया है, participating in hackathons, winning in hackathons, coding contests, open source, DSA, if you're doing all these things, trust me, in your first year, by the end of your first year, if you do this, and if you apply properly, reach out to people properly, keep posting your stuff on Twitter, LinkedIn, I am sure you will be able to land an internship in your first year, a tech internship in your first year. I had done a lot of similar things and I was able to crack a lot of internships. Some of them were teaching, some of them were actually tech जहाँ पे मैं coding कर रहा हूँ. And you will be able to make money that way. हो सकता है कि तुम्हारा first internship may not be paying you very good. It might be some 5,000, 10,000 remote रहेगा. It is okay to start with this amount. ठीक है? You can always keep improving your skills and your improved skills will pay you more money. You can also make up to 1 lakh rupees per month if you crack internships in top product companies by the time you are in your second, third year. So to crack those kind of internships, you need to have some experience with some maybe small startups or mid-tier companies and show proof of work कि तुमने सही में काम करा है and you are capable of working. So before you target those big companies, make sure कि you have done your groundwork, your homework, laid down a proper foundation for yourself. So do these things in your first year. I really hope this video has given you a clear idea क्या करना है, कैसे करना है, and कब करना है. So have any questions, feel free to ask me those questions in the comments. I will be more than happy to answer all your comments. And if you have watched this video till the end, don't forget to subscribe. I put a lot of efforts into making these videos and I would really appreciate if you could support my channel. Thank you very much. I wish you all the very best. Bye.